Elvits. Okay, start. All the best. Heads. Batting. All the best. All Our the rules best. stop from all the one. Cover small. Sir. Our 10 overs each side will. Yeah. Bowling, Ajay, bowling. आराम से। बॉलिंग है कुछ बॉलिंग है वही है ना चलता कुछ कोई बात नहीं चलो बॉलिंग है कुछ
Hello, check hello. Hello, 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 check hello. Hello, hello, hello. डिस्टर्बेंस है क्या भाई? कुछ डिस्टर्बेंस है क्या? अपना रिवर है तो कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा। बॉलिंग अली, बॉलिंग अच्छा। जो बॉलिंग Hello, 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 check hello. Manoj, 3 hours, 14 runs. अच्छी शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए अच्छी शॉट। सेकंड की तरफ से प्लेयर था। वही लगा गुड वन। अपील मगर कोई लागू और लगी सबको। Lovely, good सही बोलता, सही बोलता। चलता थोड़ा अंदर ले कुछ। चलो कोई बात नहीं बॉय। चलता कोई बात नहीं कुछ। बॉलिंग है कुछ बॉय, बॉलिंग है। और ये
और ये एक और विकेट गिरता हुआ। बसरू जो कि उठा के मारने में माहिर। टेनिस बॉल के प्लेयर बोलेंगे जो बोले। फिर भाई चाय वाला जो कि अभी भी विकेट के पास बहुत ही खतरनाक प्लेयर मौजूद। कप्तान अब्बास से बॉलिंग है थोड़ा अंदर लगा था। लवली खींचिए लवली। चलता चलता चलता। चलो चलो कोई बात नहीं। अरे उसे बैकपेट के प्लेयर बहुत ही चुस्त दुरुस्त और विराट कोहली। हुसैन के हाथों में और ये यूसुफ वापिस जाते हुए वाइट का इशारा। हाँ वही लगा बॉय वही लगा बस वही होगा। कुछ और मत कर। बॉलिंग है बहुत ही धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे वही डाल बॉल ब्यूटी है वो। गेंदबाजी। लवली वही लगा।
देखिए तीसरी मंजिल पे बैठ के मैच देखते हुए लवली है, लवली ब्यूटी है बॉल, गुड वन। वही लगा बच्चे। बैकअप। बॉलिंग है बॉय, अच्छा था। चलो कोई बात नहीं बॉय, गुड ट्राई। बॉलिंग है ऐसे इधर। बॉलिंग है शब्बीर भाई, बॉलिंग है, थोड़ा ऊपर ले लो। नकीम बैट मंगाते हुए भाई चलो जल्दी रे, क्विक। बहुत ही तेज गेंद करते हुए शब्बीर और 4 रन की ओर जाती हुई बाउंड्री। चलता बॉलिंग है शब्बीर भाई, बॉलिंग है शब्बीर भाई। बहुत ही कीमती विकेट गिरता हुआ टीम के रूप में अगले बल्लेबाज फखरुद्दीन रिपोर्ट किए गए। चलता शब्बीर भाई, थोड़ा ऊपर लाओ। चलो भाई, पहुंच लो बॉल। बहुत ही गुस्से में दिखते हुए अगले बल्लेबाज। चलो ज्वाइन है, चलो वाइड का इशारा। वैसी लगा। चलो जल्दी डायरेक्ट चलो संभाल लाइन संभाल, लेंथ फाइन है, लाइन संभाल। जल्दी संभाल। लवली ऑफ पर रख। चलो पकड़ने के लिए तैयार दोनों हाथों से। चलो बॉलिंग है बॉय, बॉलिंग है।
लवली लवली है लवली लवली उससे लवली है फील्डिंग है बॉल बॉलिंग है बॉलिंग है अब रिकॉर्ड पे डाला पॉज करा था अभी मेरा तो है ना भाई 300 विकेट ले चुके हैं चलो 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 शबीर भाई चलो लवली अरे चलो चलो कोई बात नहीं बॉलिंग है शबीर भाई बॉलिंग है लवली 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 क्या बात है गुड वन बॉल चलो चलो कोई बात नहीं बॉय आता आता चलो चलो लवली मक्खन दो चलो बोलो बोला नहीं हो बॉलिंग बॉलिंग आउट बॉलिंग और ये देखिए बहुत ही चुस्त दुरुस्त विकेट कीपर गेंद को तो शॉर्ट ऊपर कर आराम हाँ जमील भाई बहुत ही अच्छी जाती हुई गेंद 4 रन कमेंट्री रूम में मौजूद शबीर भाई के भाई पूछना चाहेंगे शबीर इतने चुस्त दुरुस्त है क्या बचपन से बहुत ही अच्छी अली मार्वल अपना विकेट खो चुके हैं शबीर भाई कम ऑन
अरे यार सॉरी 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 कप्तान अब्बास भाई बहुत ही चुस्त भागने में सबसे अव्वल अनियो अली के हाथों में गेंद तो ऑफ पर आए फाइन आए बॉलिंग से गमन वो हलवा वगैरह स्टार्ट करा लेकिन पीछे जो रजा आते ना अरे यार क्या जो घूमने के पीछे में जो रजा आते ना मैं जरा दूर आ थोड़े फिर अगर 2 दिन नहीं खा के अपन 2 दिन छोड़े तो फिर बराबर दर्द नहीं हो रहा 1 चमचा ले रहा आधा चमचा मैं 1 चमचा ले रहा हूँ हाँ गोली एक ही टाइम ले रहा हूँ पाउडर भी शाम में ले रहा हूँ पाउडर सब पूरा शाम में ले रहा हूँ और आके आएगी ज़रा फ़ोन करके फ़ोन कर लिया आप अभी भी टिके हुए यार कैच हो सकता था ये खाली बॉल टच कर रहे हैं बैट हमारा विकेट हाथ में नहीं है तो हम लोग क्या सिर्फ सिंगल करने हैं अनियो स्ट्राइक रोटेट किनके साथ था आज़ाद वालों का किसके के साथ था हाँ फास्ट यही टीम के साथ था क्या आज़ाद वाला मेरे टीम के साथ ही ना पहला मैच था ना सेकंड मैच वही मतलब वही अपना वैसे टूर्नामेंट का पहला मैच था अच्छा आपका ही था वो ना पिंडी ना पिंडी हमारे 50 मार दिए थे ना पिंडी और इसमें हाँ बॉलिंग हुसैन बॉलिंग दो बच्चे ग्राउंड में पतंग घास लेके पतंग के लिए भागते हुए बैकअप बॉलिंग हुसैन बॉलिंग through the point area. Well run. बैकअप लगा
comedy of errors, an absolute comedy of errors. चांस छोड़ो यार. Good running there from the batsman eventually getting 2 out of the 1 there. Fantastic shot, straight through the middle of region. That is going to run through the boundary. Good shot. हिंदी commentator score बताइए. Another run through the point region, point gully. Waited on that ball, made it through the gully region. That guy demonstrating very high levels of fitness there. I don't know if he's army के हुए. और ये लगा मार का नो बॉल. Good ball. Pathro de strike. और हमारे कीपर यूसुफ जिनके हाथों में से गेंद कभी भी छूटती नहीं है. Failed to collect the ball. Controlling the gully area. Better effort there. Good ball to the single and finished it comfortably. शाबाश boy. Lot of confusion there between the batsmen. There is absolutely no challenge. शाबू भाई क्या? क्रिकेट फील्ड पे बहुत अजूबे देखे. बॉलर को कैप पहन के जाते हुए पहली बार देखा. बहुत ही अच्छा शॉट समृद्धन भाई का सिंगल के लिए. दोनों ही बैट्समैन पूरी सूझबूझ के साथ अपने टीम के स्कोर को संभालते हुए बैटिंग कर रहे हैं. चलो बॉय चलो. छोटी गेंद थी. 10 रन को स्कोर या 6 तरफ एक और विकेट. लेकिन 11 की विकेट थी. अब्बास भाई की बारी समाप्त हो. अब्बास भाई रिप्लेस. अच्छे से कंप्लीट करो. शाबाश दो एक साथ. बॉलिंग बहुत ही अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन यहाँ पर. बहुत अच्छे हुसैन, बहुत अच्छे हुसैन. Calling for finding inside the circle. One toss there, a juicy ball. Umpire signaling that as a no ball. That will result in a free hit for the batsman. और ये पत्रों को एक और free hit का पाया. As per the new rules of the game, all no balls translate into free hits. So that's a not taking advantage of that free hit once again. That's the second free hit in a row that they have not been able to capitalize on. Beautiful ball there on the offside. To end the batsman. खत्म कर कुछ जी. Patru needs to know. Quite an incredible swing here. Many fielders that seem to be outside the circle are cover points, long ball.
and deep mid wicket. It is actually halfway between the boundary and the circle. That's a superb shot played over the first region, going to a boundary. Finally. फुल लगा फुल लगा रूम नको दे आगे खिला Tried to pull that over the wicket, but only landing somewhere near the mid-on area. बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा शफीक भाई की ओर से बॉलिंग नहीं Come on, क्या कर रहा बॉय Very unusual for him to be bowling down the leg side that way. हमारे विकेट कीपर जो कि आज उनका 102वीं मैच है अभी तक 200 कैच मार चुके हैं और 300 कम भी तो मोड़ दिया पॉइंट की तरफ हुसैन वहां पे फील्डिंग करते हुए और डाली सिंगल लेने की कोशिश पर नाकामयाब रहे बहुत ही अच्छा शॉट 4 रन बेहतरीन शॉट शकील की ओर और ये पकड़ो गोली की तरह फायर करता परफॉर्मेंस कैसा रहा जैसे ये इनिंग्स खत्म होती है हम उनको पीछे जा बोला रे तू 100 रन पूरे हो गए लेकिन लगन के बहुत ही अच्छा बैटिंग का मुआयना आखिरी 2-3 बैट्समैन की ओर से और इसके अंदर ये चैलेंजर के बॉलर का भी बहुत बड़ा योगदान है बहुत ही अच्छा कैच हो सकता है वहां पर बहुत ही अच्छा एक और बार कोशिश की मिडॉन के ऊपर उठाने की लेकिन 11 ने प्रयास से काफी खुश होगी चल कीपर की कलेक्ट ना कर पाए चलो यार ये 5 रन का इजाफा लेकिन 11 को होते हुए यहाँ पर हुसैन जो कि फुटबॉल खेलते हुए गेंद के साथ में चाहते तो रोक सकते थे मगर थोड़ी सी Hussain Dawood really needs to buckle up his socks. That's a nice shot from the last region. पकड़ो Getting a single there, but they'll be really happy with the progress they've made in this over. चलो बॉलिंग है उसे दो चलो मार कचरा पकड़ो इनको अभी ये वॉलीबॉल की तरह दिखती हुई सहवाग के आउट होते ही कोहली जा रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छी तरह से खेल रहे हैं दर्शकों को बता दें कि ये स्वीप शॉट स्पेशलिस्ट
पहली गेंद में स्वीप करेंगे, देखिए। क्या कर रहा उसके और ये पूछने के लिए और ये 4 रन की जाती पे दोनों का इशारा फायर था, यानी एक और 3 हिट होगी बैट्समैन के लिए। और लगता है ये पीछे के थोड़े रन चैलेंजर्स के लिए बहुत ही महंगे साबित होंगे। साबू वाला बहुत ही अच्छा स्टैंड, देखिए स्वीट शॉट तो देखने ही मिलेगा। ये तीसरी की है जिससे कोई फायदा नहीं उठाया और अपनी विकेट भी गवा दी। लोग वीडियो की साइज छोटी करे होंगे तो उसमें गया होंगे, हो सकता है। मैं अभी देख रहा हूँ मैं। पर इसको पीछे ले लो भाई, इसको पीछे ले लो। नहीं ये व्यू है यार, है तो अच्छा है ना। क्या दिख रहा बॉलर खाली एलबीडब्ल्यू समझ में नहीं आएगा बस, और कुछ नहीं। और इफ आप चेस करने की तो कोशिश नहीं कर रहे, इसको अनलॉक कर दो थोड़ा, अपन चेस करने की कोशिश करेंगे। नको बोले मैं ट्राई तो करेंगे। खाए भाई, खा अभी यहीं पे का कुछ कर सकते भाई, कुछ भी कोशिश नहीं करते ये है ना। ये है अनलॉक हो गया। अब ये कैसा घूमता, हैंडल पे घूमता, राइट आउट ऑफ व्यू चले गया बस। कवर्स, शाबाश, बहुत अच्छे। देखना ना कौन क्या कर रहा है बोल के, याद है इसका फायदा। इसका माइक कहाँ है, रिकॉर्ड हो रहा है अभी अपन जो बात कर रहे हैं, तो फिर कमेंट्री भी देंगे अपन बैठ। जब जो मैं ऊपर बैठ के एज कर रहा था मैं पूरा, तो उन लोग को पसंद नहीं आ रहा भाई के ब्लर हो जा रहा सिर्फ। भाई आप मेरा छक्का पूरा कवर नहीं किया यार, वो मारने का बंद कर दिया। करा भाई, वो दिख के नहीं आ रहा उसमें। तुम्हारी टीम का नाम क्या था भाई? हाँ बताओ। नहीं वो वीडियो नहीं है, हम दोनों एक ही टीम में है भाई, एक ही टीम में हम दोनों। तुम्हारी पुरानी वीडियो देखा मैं HCCL की, ऑरेंज में। उनको छोड़ो भाई, उन्होंने जो करना था उन्होंने करे, अपन अपने हिसाब से करना। A new innings underway now. 1 ball bowled. The score 2 runs for no loss. वो ये साइड मारे तो ये पे यहाँ पे आया था वो छक्का। Trying to defend that towards the mid-off region, but an excellent delivery by the bowler. अरे हेलमेट पहना है भाई। Hussain Harar batting there with a helmet. चल बैठा ना भाई, Seeing them in the South Art for the first time. मैं बैटिंग नहीं कर रहा था। Challengers chasing a score of 117 to win this game. Defended towards the offside again. Good bowling by the bowler there. Ali Bhai Gondal with the ball in his hand. और डीडी से उनसे गलती। Running in from right arm over the wicket. NDD Sports से Played it towards mid-off for a single. करे follow up ball. जहन से नहीं लगा। Slight correction there. Bowler is bowling left arm around the wicket and not right arm over the wicket. Putli now on strike for his first ball. Played that through the backward cover point region. An absolutely beautiful shot. The ball running towards the third man boundary, and that's a boundary. A very good, positive and optimistic start from the Challengers 11 today. भाई आप खाए नाश्ता किए बड़े भाई, केले पूरी लाया था, खाए आप? क्या हुआ, लेकर खाओ कर लूं क्या? Very good hospitality by the organizers. 10 मिनट के ज़्यादा नहीं। सैटरडे रिमाइंडर कॉल तफील Tafeel. कैमरामैन तफील। स्टैंड मिलने दे। Cameraman Tafeel with his tripod here, trying to cover the game in as much detail as possible. That's a beautiful delivery towards the off stump. Batsman just letting it go, watching it very carefully and deciding at the last moment to leave that. ये चेहरा ला लो, दो बैठ जाते। अभी जो गेम ला लेना, अच्छा रहता। 2 चेहरे। दिस भाई
और ये कुतुब रेड्डी कैमरामैन से बॉलिंग करते हुए बोलो सबने ना बोल रहा भाई ये बॉलर जिनको का पिस्ता किया गया डाटा ऑफ है वो आपका लीड चला के हिसाब से संडे कहीं नहीं संडे को है वो नाइट में आ जाओ समझ में नहीं आ रहा है संडे को जीते हैं Qutub Bhai with the ball in his hand. About to start the second over. हम लोग मारे Score, score, please. और लोगों का डाटा भी सॉलिड थे हम बहुत तो लगा रहे हैं खाली यूं करा कि बॉल चला अपने बार के भी बोलते खतरनाक खेले हालत खराब कर दिया लोगों ने 1 over 7 for no loss. अल्लाह तक ला लिए रे लास्ट ओवर में छोड़ दिया गिव अप The score at the end of the first over is 7 runs for no loss. Another 110 runs required from 19 overs. और 2 विकेट पे 225 मारे हम लोग ये बैटिंग Qutub Bhai starting strong. A wicket off his first ball. Hussain Harar there tried to cut it through the point region, but only managing an outside edge. That was picked up by the keeper very cleanly. The Deccan 11 seem very excited with this fabulous start that they have had to their innings. इस बार कप्तान ने कीपर से बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करवाई है One Hussain being replaced by another. Hussain Dawood coming onto the pitch to replace Hussain Harar. Quick exchange of bats. Batsmen coming together just to discuss what the pitch is doing. Putli giving. कब है नेक्स्ट मैच अब संडे संडे 3 है शायद संडे 3 है संडे Tried to defend that, but an absolute peach outside the off stump. नाश्ता कर रहे हैं जॉगिंग करता है भाई खेलने को बोलो पहुंच गए 4 जने पहुंचो लाके देख लेते भाई जरा वो बैट के पाचल बीजा लोगों भी छे रहे એટલે अपना नहीं भागना भी लोगों से थोड़ा आप नहीं है defended straight back to the bowler. Very good demonstration of line and length today by Qutub Bhai. कबीर नेक्स्ट मैच ऊपर बनाना लाया ऊपर से हां वही लास्ट टाइम का पूरा लेना ग्राउंड Played that towards the mid-wicket region, but Abedin Bhai right onto the ball there. इधर भाई एक पानी का बॉटल दे दो एक पानी का बॉटल दे रो अभी दे रो अरे हमारे को पूछे तो क्या होता भाई इद्रिस भाई आए तो ही ऑर्डर देते क्या अरे नहीं भाई वैसा कुछ भी नहीं है अब आके अब भी बढ़े ना जब से फिर के आप Tried to play that through the point region. A slight misfield there by the fielder, resulting in a single. Ball that down the leg side. A good take by the keeper. That's another wide down the leg side. What a beautiful. He's gotten that one right on the off stump. Well left outside the off stump. Looks like Abedin Bhai has gotten his line all right now. आलको ने सबसे बेस्ट कलर में तो थर्ड एम्पायर बना दे भाई Another wide down the leg side. That almost resulted in a run out. अरे पैड टच यू The bowler arguing that that hit his pads, but the umpire adamant that that's a wide. नहीं पैड नहीं टच Short ball outside the off stump. Played there towards the point region. A lot of misunderstanding there between the batsmen.
इद्रिस भाई कौन है बस? अल्लाह बात अच्छा आलोक हो जाए. Play that again towards the point region. पॉइंट का भाई पॉइंट बोलो जे Cover point region. I stand corrected. हो ना नेक्स्ट इसके साथ ही है आप लोगों का इनके साथ संडे संडे Another wide down the leg side. Aberdeen by seems to bowl from very good balls outside. से अपन वैसे ऐसे थोड़ी ना बैठते थे हाँ वो तो Oh, that was a beautiful piece of bowling one more time. Beat him all ends up. Played that back to the bowler very, very safely. ये बुरहानी का भी था. So end of the over. Score please. हाँ बुरानी का मैं मारा परसों तो नहीं आया नहीं शायद नहीं आ गया कल में मारा बुरानी का Can you say that louder please? अच्छी दो मैच का आया एक 3 overs, 15 for 1. अपना मैच का नहीं आया आता हूँ उसमें बहुत पार्ट डिवाइड कर दिया है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 एक मैच को 8 पार्ट में अपलोड नहीं तो थे रहा ना वीडियो साइज ना हिसाब से. 10-10 मिनट का एक पार्ट लगाया है 10 मिनट 5 मिनट 13 मिनट पूरा फुल नहीं डाल सकते. पूरे एक साथ में वो नेक्स्ट में वो ही डालेंगे नेक्स्ट टाइम पर ट्राई करेंगे. ट्राई करेंगे भाई कैमरा में अच्छा नहीं Kutub Bhai coming back to bowl his second over right on the line again. भाई स्कोर तो Played towards mid wicket where Aberdeen Bhai is patrolling the area. The score is 3.1 overs, 15 runs for 1 wicket. नाइस Pitch looks absolutely beautiful, providing an even contest between bat and ball. And Kutub Bhai adjusting his field slightly, bringing the fielder in closer. Abbas Bhai fielding that ball, returning it to the keeper. We couldn't ask for a better day for cricket. Kites flowing all around, greenery all around. अरे बॉल यार Or as an inside edge towards square leg. Batsman scurrying 2 for a single. Furkan? An appeal there for an LBW, but the ball clearly going down the leg side. नहीं बैट में भी लागो ना भाई And hitting the inside edge, I've been told. That's another glance down the leg side. I don't think he was in total control of that, but he'll take the single anyway. Keeper missing that delivery, but Munir Bhai available there to back that up. कौन मुनीर भाई तराना वाला मुनीर है चलो. उदया भाई भाई हुजैफा भाई. तू करना तो मैंने नहीं खबर है नाम लोगों. उदया भाई टराना वाला हुजैफा भाई तराना वाला. That played through the offside, but straight to the hand of the fielder. Fantastic performance there from both the fielder and the bowler. Hussain cutting that hard, but unable to control that drive or that cut. The ball should have been on the ground. Paying the price for playing an aerial shot there. Just to remind everybody, the bowler Kutub Bhai has sprained his leg today. And an injured Tiger is actually fighting very hard for his team. आता मेरे भाई गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको आता. क्योंकि जो बॉल जब थ्रो यानी कि हाथ में से रिलीज हो रहा ना जब बॉल तो बॉल तो आप यहाँ से अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं ना तो यहाँ से तो आना मुश्किल है. क्यों? क्योंकि बॉल आपसे दूर जा रहा. अगर आप उस तरफ से कर रहे हैं ना तो आपको नजर आता बॉल. तो 10 ओवर के बाद से ये पोजीशन परफेक्ट है तब आपको बॉल क्लियरली नजर आता. अभी क्या हो रहा, बॉल आपसे दूर जा रहा, तो आपको रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल है. फिर भी आप कॉन्ट्रा फ्लो करें तो आपको नजर आता बॉल. क्लियरली नहीं आता पर नजर आता. बॉलर कौन जो फखरुद्दीन Fakhruddin starting a new spell.
but a wide down the leg side for his first delivery. क्या वो मैं लास्ट ऊपर से करा पूरा, तो मैं जितना हो सका उतना कोशिश करा हमने. Some technical discussions about the camera and the recording happening here. Wide down the offside this time. 12 देखो इसमें नजर आ रहा है. Played that towards the offside. With 4 overs up, the fielding restrictions are up. The field spreading out. You see a deep square leg, a long off, a deep cover point, a third man that is just outside the circle, and a fine leg. Another full toss there, tried to pierce the gap on the offside, but was not successful in doing so. Huzaifa Bhai Taranawala, very active onto the ball. Tried to hit that again through the third man region, but was not successful in doing so. End of the over there for the wicket. A fantastic shot from Putli there, but picked the fielder again. Huzaifa Bhai has been all over the ball today. The Deccan 11 seemed to... A full toss! Should have gone over the square leg region, but have only edged it. And Huzaifa Bhai dropped that. That was an easy catch, but I think he got a little too excited there. Oh, what a great leveler this game is. He was right on top. Easy catch. A loud appeal for a leg before, and the umpire's given him. Qutub Bhai does not need the fielders to help him with his wickets. He's going to do it all by himself. Shudri bhai, next tempo noto. या फिर गेम जो है रे तो विकेट ना पार्सल थोड़ी ऊपर है. जज को कही देखे ना. गेम करी सके जज. एक्स्ट्रा में हो रहा है. मुझे लग रहा है सही. How can you judge man? रन पे आ रहा ना पूरा. हाई किक. लाइन तो लेग पे. Some discussion. उस्मान खाजा है प्ले नहीं है. नहीं है. नहीं है. शॉन मार्श है. शॉन मार्श अच्छा. शॉन मार्श कॉर्नर ऑन पैटर्निटी लीग. Another full ball outside the off stump. सीरीज जीतने के बाद फिर ट्राई करते हैं. इसमें तो A short ball outside the off stump. But the pressure that the fielders have created and the bowlers have created is resulting in dot ball. Cut that through the gully region. That will at least be a single towards the third man area. A good way to get off the mark for Yusuf. End of the over for Qutub Bhai. Another successful over. रन ज्यादा है ना. 14 ओवर है ना. हाँ. नहीं 13 ज्यादा है ना तो 7 पर ओवर. हाँ. मैं Almost chasing 7 and over now. अभी टिकना है इधर. 10 ओवर के बाद मार सकते हैं. It's not going to be easy now for the challengers. They are now chasing 7 runs and over with 7 wickets in hand. Laid that through the leg side. A very elegant shot. Should look for a 2 there, but fantastic fielding by Hakeem. He has a rocket arm, made sure he picked it up cleanly and drove it back to the fielder. We have an additional fielder on the ground now. He's also geared up in black like the rest of the team. A short ball, tried to pull that to mid-wicket. Fielded well, although he could have had a shy there at the stumps, deciding against it. Abedin Bhai will look to hold the pressure that Qutub Bhai has created from the other end. What a shot that is! Right over the cover region. The ball is running towards the boundary, and that is a well needed boundary for the challengers. The challengers team is egging on their batsmen. They want him to be aggressive. They want him to score some runs. That boundary was very badly needed by the team. 6 runs coming off the first 3 balls there. Oh, wide, and a very valiant attempt by the keeper, but could not stop that, and that is 5 bonus runs to the challengers. Short ball outside the off stump, well defended.
Back to the bowler. Good comeback there from Aberdeen Bhai. A full-length ball, almost in the block hole, but well defended by Yusuf. End of the over. Fakhru going to continue his spell, taking his long off slightly inside. Started off with the ball down the leg side. I think the batsman missed out there. That was an easy birthday gift, or a Sankranti gift, shall I say. Ball outside the off stump. I think that got the edge. The keeper made 2 or 3 attempts but was not successful in grabbing the ball. Be very interesting to see if he actually got some bat on. To rotate the strike, Yusuf looks in great form. A good shot towards the point region. The third man running around, diving acrobatically, stopped the ball but is unable to stop it too. In the meantime, we have a kite flying down onto the ground. Moving right towards the long off fielder. Good ball and a good shot. This is good cricket all round. The fielder feels that, returns it to the keeper, and Moise completes a single. That brings Yusuf on strike, who is the form batsman for the challengers. Another ball outside the off stump. Yusuf has heaved it. And another catch that Huzaifa Bhai Taranawala has dropped there. It was a tough chance, but a catch that he should have taken. The fielder saying that's okay, let's focus on the next one. But they really have to grab these chances. हाँ वो स्पिन बॉलर नहीं मीडियम पेस है मीडियम पेस है ना Bowler का नाम Fakhru है ना? Fakhru seems to be bowling a consistent line outside the off stump. Just getting a little bit of movement. There is another one, moved slightly outside the off stump, maybe the 5th or the 6th stump line, and Moise not successful in getting a single there. Ali Bhai Gondal coming back for a second over, left arm around the wicket, trying to entice the batsman into playing some aerial shots now. Interesting field there, the cover fielder coming in, the extra cover coming halfway through from the boundary. Played very, very delicately through the point region. I think that's going to make the boundary. The fielder diving all over the ball there, but not able to stop it. That was beautifully played by Yusuf. Above all timing and placement, there was no power behind that shot. Just utilized the pace of the bowler. हम लागू ना बाउंड्री आते हैं It's placement. That causes a change in the field. Hakeem moving now towards the third man area. He is easily the fastest fielder in their team. Maybe joint fastest with Aberdeen Bhai. Another shot through the similar region, but this time there are 2 fielders to back that up and are able to stop that to a single or keep that to a single. कैचेस विन में आते हुए ये ना भाई बे कैचेस टूटी है बनने ना एक लाइफ मिली है. The old adage, catches win matches. Both batsmen on the pitch have now been dropped. A flower one there, very well thought of delivery. Getting the inside edge, but not successful in getting the breakthrough that they would have hoped for. मैं फास्टेस्ट बोले भूलिएगा अब्बास भाई है आराम से My apologies to Abbas Bhai, who is also the joint fastest, along with Hakeem Bhai and Aberdeen Bhai. He's patrolling the square leg area. Pulled off outside the off stump. That deserved a spanking, and it got exactly what it deserved. A fantastic shot there from Yusuf. Brings up his 3rd boundary with that shot. कैच कोई छोड़ो, Huzaifa Bhai छोड़ो ना. बनने दो.
कीपर भी छोड़ो ना एक ना छोड़ो कि मोइज ने छोड़ो 3 catches going down so far on the field. Good comeback from the bowler. Tightening up for the batsman. Batsman wants to convert that to 2. And was able to do so successfully. That is fantastic. This has been a very expensive over from Ali Bhai so far. Another single coming up of that delivery. End of the over. And the score now is 9 overs, 48 for 3. 9. A fine leg and a deep mid wicket. Starting off with a short ball down the leg side, signaled a wide correctly by the umpire. Challengers really need to tighten things if they want to get back into this game. Another short ball down the leg side. Batsman waited for it and comfortably put that away for a boundary. Absolutely zero risk in that shot. A rank. मारवाना बॉल मार दी है. That is beautifully played down the offside this time. Straight to the third man region, where Hakim decides against throwing that. Advice coming from the pavilion, नीचे से खेलो. That was a beautiful shot by Moiz. Yusuf seems to have rubbed it off to Moiz as well. And that's the first boundary that I can recollect Moiz hitting. So very good shot. A nice flick through the mid. Another short ball towards the leg stump and tucked around the corner for another single. Beautiful batting there by the challengers. They seem to have gotten set now. Outside the off stump and cut just behind third man. There'll at least be one more. Good fielding there from Hakim restricts that to 1. In the hands of a left fielder, that could have been 2 or 4. Huzaifa Bhai Taranawala has been very expensive so far. But that was a strong reply from him. That was a good way to finish the over. A wide down the leg side, that will at least be one additional run. Examining the field closely, picking his gaps. Played back to the mid-on area for a comfortable single. Cut that just behind point. Hakim herring after the ball and keeping it down to a single. That is beautiful fielding from Hakim. Ground का ना जाओ भाई. Played that again through the covers. Huzaifa Bhai fielding it this time and returning it to the bowler. सामने मुकर अपने जो भाई करते हैं. Boycotting that delivery there. Of a wild slog across the leg side. Absolutely no need for that kind of shot. Yusuf needs to compose himself here, but at the same time, the Deccan 11 need a breakthrough. Couple of quick wickets here and the match will take a very interesting turn. Cut that again towards the third man area. And Hakim picking up cleanly and returning it back to the fielder. Returning for the second over. The first one had been very expensive. A kite just beside the umpire disturbing the game. Happy Sankrantri umpire, sir.
seen a lot of things in my day, but I've never seen an umpire hold a kite on the cricket field. काइट के लिए किसी को भिजाओ वो रन मारो. Another cut shot, but Aberdeen by right on top of the ball there. Fantastic fielding, good clean pickup. Another wide down the leg side, keeper missing that. The fine leg fielder didn't pick that. Another catch going down. Abbas by Palanpur dropping that. He's one fielder that you would not have expected to having dropped that catch. Putli now having his second life. This is really uncalled for by the Deccan 11. But Lady Luck seems to be smiling today on challengers. Short ball outside the off stump, well defended to the point fielder. Yusuf looking very comfortable at the crease. Cutting that towards the point region, but Aberdeen Bhai making sure that he's not conceding any run for his team. Single-handedly palta hi match, plus alog nahi fielding. Plus catches. Fielding which? Another short ball outside the off stump, but well defended to the point region. The bowler checking with the umpire how many balls are there in the over. That's the end of the over. To ensure that no extra runs are conceded now. Hitting that straight back over the bowler. Kutubai unable to bend to field the free tickets and become a millionaire today, Moez. Defended again to point. मेरे को बॉलिंग नहीं समझ और एक साल में बॉलिंग भूल जाता मैं अब. Beautiful shot there, right over the point area. Aberdeen Bhai too far inside the circle to make that a catching opportunity. If he was slightly behind, he would have had a chance there. Hakeem Bhai patrolling the third man boundary, getting anxious to bowl himself. So fantastic shot. Played towards square leg and mid wicket, but the fielder keeps it down to 2. Great fielding there, but good shot, good placement and good running by the batsman. I have to admit, when he hit that I thought it was a boundary, but the fielder had thought otherwise. Beautiful ball that Moez finally runs out of luck. He had at least 3 lives today, but that is it for his game for this innings. A very good innings. He held it together until now for the challengers. A good knock. 12.5, 73 for 4. 44. $73 और 44 जो ये 12.5 की दूं मेरे हमने. 44 जो है ना. Bowling his third over. He's bowled a few extras in his last couple of overs. He has to make sure that he keeps it tight now. Wow, Yusuf got really lucky over there. The pressure showing on him now. Maybe it's tiring hands. Tried to cut that towards the offside, but not successful in doing so. The ball narrowly missed the bail, the off bail there. Another outside edge. Hakeem chasing that ball towards the third man boundary, managing to stop that. An absolutely beautiful piece of fielding. Superb work there, making sure that his team stays in the game. Superb race, Hakeem.
That's a wild slog towards the offside. Right, eh? The incoming batsmen only need to support Yusuf here, who looks in great form today. Hit that towards the mid-wicket region. That's an empty mid-wicket region. The fielder diving there, trying to save the ball, but no. That was another flog. Managed to... And he's bowled him! Out of the blue, something extraordinary has happened. Yusuf has lost his off-bail there. And you can see the delight on the faces of the Deccan 11 team. They think they've already won the game. Yusuf played some delightful shots, entertained the crowd thoroughly today. But that's the end of his innings. And that brings Deccan 11... Full toss, playing that towards the mid-wicket region, getting an easy single. I don't think the bowling team will be too upset with that. Two new batsmen at the crease. The bowling team will want to pressurize them. The batting team will need 2 or 3 boundaries to get the equation going in their favour now. Bowled that outside the off stump. A fantastic shot over long off. Kutubai just unable to run behind the ball, but the ball choosing to stop itself. Four runs coming off the first 2 balls. Hakim bhai. The captain needs to think about their field placement. Smash that towards long off, but the bowler got a hand to that, and that keeps it down to 1. And he's bowled him! What a great comeback that is by Aberdeen. He didn't get disappointed by the lofted shots that were played earlier, kept it up and got the reward of keeping the ball up. Beat the batsman's defence, knocked the middle peg back, and that's an absolute delight for a bowler to see. The middle stump going back is what you dream of when you start to bowl. A full toss there, but the batsman failed to capitalize. He got a single and I think he'll be happy with that. A loud appeal for a leg before, lot of pressure on the umpire, but fantastic umpiring from the umpire there. Choosing not to give the decision because of the pressure of the field. Tried to cut that back towards third man, but only hitting that to covers. But successful in extracting a single. Hakim, Kufema showing his experience there, making sure that he's rotating the strike as soon as he's come on to 29 balls, 31 to go. 4 wickets in hand. भाई स्पॉन्सरों को भी डाल देना उससे पहले डालें हाँ Down the leg side. Batsman wanting a 2 there, but the fielder keeping it down to 1. फील्डिंग The umpire signalling a leg by there. The bowler lucky to get away with that. Beautiful ball outside the off stump. The fielder's appealing there. Another tickle down the offside, but no outside edge there. The fielder's trying to pressurize the umpire into giving them a decision, but the umpire is equally experienced. भारी नहीं अच्छा या बुरा भाई थोड़ा क्लैरिफाई करो भारी मतलब अच्छा बहुत अच्छा boycott beautifully bowled outside the off stump, good keeping there as well. He has to make sure that he does not Kufema stepping out, hitting that towards mid wicket, but picking the fielder there. Ali Bhai collecting the ball safely, deciding not to throw it.
End of the over. The first dot ball of the over. 29 runs to go off 23 balls. Kovema needs to utilize his experience and get a single now. Stepping out, trying to get a single. Wide. But the umpire says that is not out. Wide. Was that a wide, umpire sir? Wide ball. A catch there to the gully region. And Hakeem takes that easily. He absolutely clobbered that catch. Kovema unable to utilize his experience today, unable to translate his good batting into runs. The next match coming out here, I think for the toss. I think we are the captains here for the toss for the next game. थोड़ा back. और back. हाँ. Dinesh uncle, no? Yogesh uncle showing the coin there. Call. Who's going to call? Tails. MCC calls tails. And it lands as a tails. Thank you. Yeah, want to bat first. You're going to bat first. Okay. And you will obviously bowl next. All right. So all the best to both the captains. Thank you. All the best. Thank you. Thank you. Tried to hit that over mid-wicket. That was a really bad shot by Shabir Bhai. The ball was long way outside the off stump. He would have been better off trying to play that through the offside. The batsmen creating unnecessary pressure onto themselves now. A short ball again. Hit that just about where the bowler was, but getting a single. मुश्किल बॉल दोनों थे क्यों अपने कहिए जंग करे बरोबर ना कीजिए लोगों को another dot ball there, another dot ball. Lot of pressure there on the batting team. चार ओवर की लोगों ने बॉल ग्रुप मार लो अबे 90% विकेट तो If this is a power play, then we could only have 3 fielders outside, but I can see 5 fielders outside the circle. हकीम अंदर है 1 2 4 जने बाहर है. 4 बाहर I can see square leg, long ball. बोलिए तो ना वाइड में नो बॉल नहीं दे सकता वो लोग देखे थे ना ना नहीं क्यों ना ये लोगों ने इसको मतलब चापे कहीं तो बजे लोगों को दिया Hit that towards the third man region. Intelligently fielded by the fielder there. Not getting excited and not throwing. प्रेशर में आ रहे हैं लोगों को. Now there are only 2 outside. This is aggressive captaincy here. Fakru stop. Bowled him. Fakru has turned this game on its head completely. Abbas Bhai, I'm sorry about that. Abbas Bhai has turned this game on its head. The final 2 wickets now. फोन कॉल करो फोन पे. नहीं मेरे पास नंबर. मेरे पास नंबर से कोई ना. दाऊद ऑर्गेनाइजर्स में. ओह. हाँ. कर में कॉल. हुसैन भाई. नहीं सामने रहे. आप बेवकूफ़ी कर रहा है वो कीपर. आंसू. चलो ये और एक विकेट. दाऊद तू तो था तो रन आउट सबको. लाइन से और पहले ही प्रेशर बना दिया. नहीं वो यूसुफ आउट हुआ तब से खत्म हो गई गेम. यूसुफ था तब आ रहे थे रन बस. उसके अलावा और कोई भी नहीं खेला. खाली फरारी हो रहा था. मारी रोज एक मोटी बात तो इंटरनेशनल टीम में 12 का आते ये सोलना फीके पड़ा थे. ये मिड विकेट देखो डीप मिड विकेट पे मारे तोड़ा था. 12 का रन आ गया तो इंटरनेशनल भी फीका पड़ा था. आ गया आओ हुसैन आओ. अरे मैं आना मत कमेंट्री. हमें तो रिकॉर्ड था से.
इसमें आती है डर के जरूरत नहीं। That's another wicket going down. भाई माइक ऑफ है। 9 wickets. ये माइक है। 9 wickets down now. The Deccan 11 coming back into the game very, very strongly. They've almost won the match now. Just 1 wicket left to go. अच्छा 9 विकेट सही है। कफील कहीं पीछे बढ़ जाएंगे। मैं पट्टी है वीडियो में। Ace to hockey match. चलो एक हारे एक जीते मतलब ये लोग फिर भी लास्ट में तो जीतना ही है ना। Well fielded by Aberdeen Bhai, but throwing it at the wrong end. Beautiful fielding, but choosing the wrong end for the throw. Did not have the presence of mind there. अब तो भी छक्का मारो यार, उठ के आगे बढ़ गए। Missed the cut shot towards the offside. सिंगल आना ही मुश्किल है। लास्ट में खेला ना। एक ही विकेट टू विकेट ही लेंथ रखे एक्यूरेट एकदम। देखो छुटा दे सीधा कीपर के पास ही रहा। कीपर बॉलर ही कर रहे। मार लगा उसको। तो अच्छी बात है बुरी बात है। बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है ना। पहले पड़ा बैटिंग पे। नहीं देना है तो दे दे। बेचारा काम आने जा रहा। The game seems to be almost settled. It's merely a formality now to finish the innings. 21 run. दो रन ही है। Miraculously अगर Don't know the exact equation here due to a communication failure between the scoreboard and the commentary box. युवराज सिंह को ढरा। But the equation seems to be around 21 runs required of the last over with 1 wicket left in hand. उन्हें भी तो सोच। Aberdeen Bhai signaling the entire field to go out. I wonder why, because there's just 1 wicket to go. Afridi all smiles there at the batting crease. Seriously यार ये लोग थोड़ा The outcome of the match does not seem to bother him a lot. He seems to be having fun about his game. गिफ्ट देगा क्या मैच? वही लास्ट में। Kutub Bhai signaling something from the boundary. लास्ट विकेट थी ये लोग दे दिए था कुछ। अभी तो नहीं भी अच्छा बॉलर है। उम्मीद करो। बैगन मार दिया सिंगल। क्या करा? लास्ट बॉल पे रन नहीं लिया, अभी सिंगल निकाल दिया पहले बॉल पे। क्या भागना। उन्हें लास्ट बॉल पे रन नहीं लिया, छक्का मारेगा। ऐसे टाइम पे दोनों का भाई ऐसे टाइम पे ये लोग का मॉरल कम होता है, लोग का बढ़ जाता है। India 236 for 240.4 overs. देखिए बहुत बुरा। इंडिया कितना 236 for 2 41 overs. Rohit Sharma 117. कौन खेला? कोहली खेला। Sharma 117 of 123 not out. शर्मा लास्ट में Rahane 52 of 51 not out. 300 मान के कोहली आउट हो गया। कोहली कितने पे गया? अल्हम्दुलिल्लाह। Kohli 59 of 67 run out. धोनी नहीं आया। धोनी नहीं आया भैया। लास्ट में अभी कहाँ से? अभी तो वो आया होगा। क्या बोले? रहाणे। नहीं क्रिकेट मैच। बॉलिंग। अरे बाप रे सॉरी कुछ काम है। 3 बोले में काम नहीं कर खत्म हो गया। 4 छक्के मार दो। हां फर्स्ट बॉल सिंगल लीड हो, सेकंड बॉल 14 भी रहे तो फर्क पड़ता था। अच्छा वो लोग उम्मीद हार गए थे शुरू से। हसन यमानी जो ही है ना मतलब बोल्ड है। और ये the innings ends there. मशीन वाले बोले Hit the leg bail. A fantastic game for the Deccan 11 there. Great performance from the bowlers. And that ends this innings. A good game of cricket. The Deccan 11 finally coming on top. A great demonstration by their bowlers. The fielders let them down slightly. But an overall good game of cricket. Congratulations to the Deccan 11. Winning the game by around 20 runs. So that's it for the day. We'll meet you at the beginning of the second match between थैंक यू अलविदा। ये नहीं MCC and Alabaf will grave the field in the next half an hour. Meet you again there. Hasta la vista. आवाज ये लॉन्ग So cheer.